Hello everyone, welcome to Aptplus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. So let's get started with the topic first. Today is 7th of September. The first topic is Supreme Court concern over tribunal vacancy. This is something which Supreme Court has been advocating for a long period of time. Second, vaccine in the work against the Nipah virus. The concern of the Nipah virus is there. So scientist community is trying to utilize the COVID vaccine in the Nipah. The third is PM to attend BRICS, SCO and Quad meetings. CSE to start passport services collection center. And the last is long and short of the NMP, the National Monetization Pipeline. So this is an editorial from the Hindu. Now talking about the other stuff that I'll be discussing at the end of this video. So there would be some MCQ questions. These would be based on current affairs that will help you in the upcoming prelims examination. Those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Aptplus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. Now let's start our session with the first news, that is SC concern over tribunal vacancies. This is something which is important for General Studies paper 2 under the section structure, organization and function of executive and judicial. So tribunal is something which is again very important for your static portion. अगर आप बात करें prelims में, खास करके पॉलिटी के sections में, तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल से क्वेश्चंस हमेशा यूपीएससी पूछते रहती है. सो मेक श्योर आप ट्राइब्यूनल के जो बेसिक स्टैटिक चैप्टर हैं एम लक्ष्मीकांत में उसको अच्छे से पढ़ लें. Now, the special bench of the Supreme Court, which was led by the Chief Justice of India, Mr. N.B. Ravana, उन्होंने कहा है कि concern है regarding the delay of the appointment of long pending vacancy in the tribunal. This is not for the first time the Chief Justice, Mr. N.V. Ravana, has raised a concern. Previously also, they have said that these vacancies need to be filled as early as possible. Now the court said that it was not interested in confrontation with the central government, but they want कि court के जो patience है उसको भी government test ना करे. Right? These are some of the harsh statement that was coming directly from the special bench. Special bench ने और भी कुछ चीजों को note किया, where they have noted that the centers should confirm and fill the long pending vacancies in key tribunal by September 13. So this is September 13, 2021 that the deadline was provided by the Supreme Court special bench so that the central government can fill this post as early as possible. Now कुछ options दिए हैं court ने, options that was provided by court. So the special bench of the Supreme Court has said there are three options, तीन major options हैं. First, close the tribunal, या तो पूरी तरह से जो tribunals हैं उनको बंद कर दे. Second, make the appointment itself. Or third is to initiate the contempt. The contempt that would be issued by the Supreme Court in light of the fact that the central government has not abided by the rule of the Supreme Court, right? So this is something which call for the contempt या फिर कोर्ट की जो orders है उसकी अवहेलना करना, not to abide that rules. Now बात करें post of vacancies that is waiting or that is pending across the tribunal. So there are more than 200 posts that is lying vacant across 15 tribunal. I will show you a list in the later part of the video जहाँ पे आप देख पाएंगे कि हर tribunal में कितनी vacancies हैं. So the vacancies are critical in critical tribunal. कुछ ऐसे बहुत ही important tribunals हैं जहाँ पे vacancies अभी भी खाली हैं. It should not be vacant, right? So these are some of the important tribunal that actually govern Indian economy also, right? कहीं ना कहीं जैसे National Company Law Tribunal है, बहुत सारे disputes जो है कंपनी रिलेटेड अगर उसमें अपॉइंटमेंट नहीं होगी तो वो केसेस पेंडिंग होंगे और अल्टीमेटली जो लॉस होगा वो इकोनॉमी को होगा, राइट? एंड NCLAT जो जिसको NCLAT भी कहते हैं, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, राइट? The vacancies are also there in armed forces and consumer tribunal that is lending to the delay in the resolutions of the cases. So the pending cases, because of the paucity of the members or the post lying vacant, the resolution is not being given at the time. So this is the list of the vacancy. This is the updated one. This is on the 5th of August 2021. So you can see the entire 15 tribunal mentioned over here
You can pause this video, you can take the screenshot. अब देख सकते हैं यहाँ पे चेयरपर्सन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में बात की गई है. दिस इज अबाउट द जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल एंड अदर मेंबर्स. सो कितनी कितनी वैकेंसीज कहाँ पे खाली हैं, कहाँ पे कितनी ज़रूरत है, दीज आर द रिमार्क्स, राइट. सो दिस रिमार्क्स वुड बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड रादर सजेस्ट यू कि आप इसके एक स्क्रीनशॉट लेके आराम से या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं. Now, vacancies in the work against Nipah virus is the vaccines that would be working against the Nipah virus that the scientist community is trying to understand this. Something which is important for your general studies paper 2, issues related to development and management of health. The scientific community is working on a possibility to know whether the Covishield vaccine, right? जो Covishield vaccines है वो effectively काम करेगी Nipah virus पे या नहीं, right? So this is Covishield. I think there's a spelling mistake in this. So this is the Covishield vaccine, whether they would work or not. बेसिकली कवर शीट में ये बात हो गई. आप कवर शीट भी बोल सकते हो क्योंकि उसकी एक वेरिएंट है, राइट. सो दिस इज समथिंग विच दे आर लुकिंग कि हाउ अ वैक्सीन पॉसिबली कैन वर्क ऑन द नीपा वायरस. सो प्रिलिमिनरी एनिमल ट्रायल रिजल्ट टू सी सजेस्ट दैट रिसर्चर ने बताया है, जेनर इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने साथ में मिलकर के एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन वेक्टर जिसको ChAd-O-X1 कहते हैं, उस वैक्सीन के साथ कस्टमाइज की है, कुछ कस्टमाइजेशन की गई है, कुछ उसमें चेंजेस की गई है सो दैट इट कैन वर्क इफेक्टिवली ऑन द नीपा वायरस, राइट. एंड इट शोज कि जो अफ्रीकन ग्रीन मंकीज के जो इनिशियल प्राइमेट स्पीसीज हैं उनमें इसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी रही अच्छी और ये ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं. सो व्हाट इज दिस ChAd-O-X1? ये क्या है? This is a multi-purpose vaccine vectors, which meaning that it can be customized to carry DNA, right? एक multi-purpose vaccine vector है जो कि customize किया जा सकता है DNA forms पे, which can be varied from pathogen to pathogen, right? So this is completely a DNA based, and the version of ChAd-O-X1 is used as a Covishield or AstraZeneca vaccine, जहाँ पे पीस ऑफ स्पाइक प्रोटीन ले जाते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ स्पाइक प्रोटीन वर्क. इफ यू वॉच आवर प्रीवियस वीडियो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस. नाउ नीपा स्टडी साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो नीपा के जो खास करके जो चिंपैंजीज में ट्रायल की गई उसमें ये पता चला कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है फ्रॉम द नीपा वायरस स्ट्रेन विच इज फाउंड इन बांग्लादेश एंड एनुअल आउटब्रेक विच अकर देयर, तो उसके कुछ इफेक्टिवनेस एक्चुअल रही है और साइंटिस्ट को ये उम्मीद है कि इसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी अच्छी रहेगी नीपा वायरस पे भी. So the test vaccine of the purpose is to study called the ChAd-O-X1 NEV. So इस चीज़ से जो वैक्सीन बनेगी ChAd-O-X1 से जो डिराइव होगी उसमें से 1 की जगह चेंज कर दी जाएगी. The 1 would be replaced by the NIV. This would be mentioning that this is for Nipah virus, right? So concept सेम है, DNA based है, उसकी जो वर्जन है, जो वैक्सीन की जो वेक्टर्स हैं वो सेम है, स्पाइक प्रोटीन की मेथडोलॉजी यूज़ की जा रही है, बट द नेम वुड बी चेंज. And the trial that was conducted in the chimpanzees, this shows the positive results. Now trials हुई हैं अफ्रीकन ग्रीन मंकीज में. This shows the promising result offering the protective immunity. और ChAd-O-X1 जो वैक्सीन है, this was customized to protect against the Nipah virus. So do not get confused. O-X1 NIV, these are the other category of vaccine that will help to cure the Nipah virus. आपसे एग्जाम्स में किस वैक्सीन्स को किस डिजीज में यूज की जा सकती है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है. PM to attend BRICS SCO Quad Member Summit. This is something which is important for your general studies paper 2, bilateral grouping and agreement evolving India's and affecting India's interest. प्राइम मिनिस्टर ने जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही वुड बी चेयरिंग द मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स लीडर दैट इंक्लूड चाइनीज प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट एंड द लीडर्स फ्रॉम द ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका. सो दिस इज द फर्स्ट समिट which is expected to be held in September, right? And the decision was taken to discuss the issues of Afghanistan situations. And the meeting would be held in a virtual mode amid the COVID-19 restrictions. क्या क्या फोकस होगी इस मीटिंग की? अगर आपसे मेंस में अगर क्वेश्चंस पूछे जाएं तो यू मस्ट इंश्योर कि आप ये कंटेंट्स लिख रहे हैं. इन प्रीलिम्स ऑल्सो दिस कैन बी इम्पोर्टेंट. तो ब्रिक्स मेंबर्स की जो भी मीटिंग हो रही है 9 सितंबर को, उसमें कुछ 4 प्रायोरिटीज एरिया आइडेंटिफाई की गई हैं. फर्स्ट इज multilateral reform in the bodies such as UN, IMF and WTO.
यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करनी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एज वेल एज सिक्योरिटी एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज, द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल that need to be culturally valued. This is something that would be a core idea of the meeting that would be discussed, right? And the leader would also exchange the views on the impact of COVID-19 pandemic and the current global and regional issues. So you can see these are the member countries. Many times students tend to confuse an examination. प्रेशर्स में वो भूल जाते हैं कौन से कंट्री किस मेंबर्स में है। तो ब्रिक्स की बात करें, यहाँ 5 कंट्रीज हैं, आप याद रखें। दिस 5 countries include Russia, China, India, Brazil and South Africa. So this is very easy. BRICS is in mnemonics itself call for the country. But HCU में आपको थोड़ी चीज़ याद रखनी की। फर्स्ट इज चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, यूज़बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान. So these are the HCU member. Total member is 8. So make sure आप ये दोनों कंट्रीज को याद रखें, मेंबर कंट्रीज के। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको भी अटेंड की जानी है, जो कि होनी है स्पेन में सितंबर 16 एंड 17. एंड प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स. उनको जाना है. ही वुड बी मीटिंग विद द यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बिडेन एंड ही वुड बी एड्रेसिंग द US General Assembly. An SU meeting that would be held in Tajikistan would see the focuses on Afghanistan that have a regional balances. यहाँ पे अगर बात करें रशिया की, even China and Central Asia, these countries are more concerned what is happening, the power sharing or the power change that has occurred in the Afghanistan region. Now CSC to start passport services. This would be a collection center that would be held. So this is something which is important for General Studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sectors. गवर्नमेंट ने कहा है जो कॉमन सर्विसेज सेंटर्स हैं वो अब अप्रूवल के लिए, इवन जो पासपोर्ट सेवा केंद्र जो कियोस्क हैं रूरल एरियाज में, उनके लिए इनको ऑथराइजेशंस मिलेगी एंड दे कैन रजिस्टर एंड इवन दे कैन गिव द पासपोर्ट टू द पीपल, राइट. सो लो विलेज लेवल जो इंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं CSCs को, उनको ये इंटरेस्ट किया जाएगा. दे वुड बी प्रोवाइडेड द पावर दैट दे कैन कलेक्ट द डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ और जो नेसेसरी डिटेल है एक पासपोर्ट प्रोसेस के लिए वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एंड इनिशियल नॉन पुलिस वेरिफिकेशन वुड बी रिक्वायर्ड एज वेल एज इनिशियल नॉन पुलिस वेरिफिकेशन. So a nominal fees would be charged, that is 100 rupees has been fixed by the government. और CS एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो कि पिछले 3 सालों से काम कर रही है बोथ इन द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर्स. सो व्हाट इज कॉमन सर्विसेज सेंटर? बात करें, एक स्ट्रैटेजिक कॉर्नर स्टोन्स है वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की. गवर्नमेंट ने जब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया उसमें CSC का एक बहुत ही अहम रोल है. कॉमन सर्विसेज सेंटर हैज प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल and it has delivered various electronic services to villages in India, and at the same time it has made India more digitally and financially inclusive. So the purpose of multiple single services point would be to provide the facilities, चाहे वो single geographical locations में हो या फिर rural areas में हो. तो आपसे मेंस एग्जामिनेशन में इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं. मेक श्योर you are thorough with the common services centers, right? Or even in the case studies you can take an example that how these have reformed the rural economy or even the rural people life. So this can have access to the delivery of essential public utility, चाहे वो social welfare schemes हो, healthcare हो, financial services हो, educational हो या agriculture services हो, that everything is provided in B2C format, that is business to consumer, right? Amazon is like business to consumer. ऐसी जो भी entity हो जो business से directly customer पे deal करती है उसको B2B कहते हैं. ऐसे एंटिटी जो सिर्फ बिजनेस से बिजनेस टू डील करती है उसको B2B कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, राइट. सो दिस इज हाउ एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो इंडिया मार्ट. जैसे वो इंडिया मार्ट एक होलसेलर है जो सिर्फ अपने डीलर्स को ही सेल करता है, राइट. सो दीज आर द 2-3 एग्जांपल्स एंड हाउ दिस कॉमन सर्विसेज हैव ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी इन द कंट्री. आई वुड से रूरल एट द रिमोट एरियाज इन द कंट्री. करंट CSC सर्विसेज की बात करें, पायलट बेसिस पे इसको लॉन्च की गई है इन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, और ग्रेजुअली द फुल रोल आउट वुड बी देयर इन द नेशन वाइड. और प्रेजेंट में CSC आर अलाउड टू अपलोड द एप्लीकेशंस फॉर्म. जो भी एप्लीकेशंस फी है वो एप्लीकेशन के बिहाफ पे जो एप्लीकेंट है जिन्होंने अप्लाई की हुई है उनके बिहाफ पे पैसे को कलेक्ट कर सकते हैं एंड कैन शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर देम, राइट. सो दिस इज हाउ थिंग्स वुड वर्क एंड इट विल ट्रांसफॉर्म द
basically the facilities that is provided to the rural people. Now the long and short of NMP, basically we have discussed a lot many time about the national monetization plan or pipeline you can say, but in this we'll try to understand कि क्या क्या कुछ important चीजें हैं जो आपको अपने NMP के notes में add करने की जरूरत पड़ेगी. So this is something which is important for General Studies Paper 3, inclusive growth and issues arising from it. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, these are the subtopics. Trying to make a distinctions between the privatization and monetizations, sectors sought latest for asset monetizations, asset monetization के क्या क्या concerns हैं, significance impact क्या हो सकती है और public sector की efficacy कैसे बढ़ सकती है. So the entire editorial is themed under the national monetization pipeline. इस बार के रिसेंट बजट में जिस तरह से फिनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू मोनेटाइज द operationalization of infrastructure, I said they have declared it as one of the most significant efforts that was taken by the government, right? चाहे वो construction की बात हो या फिर नए infrastructures की बात हो. So NMP has unveiled and shows that the government intend to raise 6 lakh crore, right? Initially also in our previous video I have given you a graph. If you have not watched that video, do check it out. वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस तरह से हर ग्राफ में कितने पैसे को रेज करने की बात गवर्नमेंट ने कही है, स्पेसिफिकली फ्रॉम द कोर एसेट्स. आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. नाउ ट्राइंग टू मेक डिस्टिंक्शंस, यहाँ पे जो नीति आयोग ने दो टर्म को यूज किया, वन इज प्राइवेटाइजेशन एंड अदर इज मोनेटाइजेशन. तो इसमें किस तरह से डिस्टिंक्शंस की गई है नीति आयोग के जो एसेट मोनेटाइजेशन गाइडलाइन है, लेट्स सी दैट. बट एक्सपर्ट के मुताबिक, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो फंक्शनल डिस्टिंक्शंस है बिटवीन द एसेट मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन वो एक दूसरे तरफ जाता है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल पर्सपेक्टिव, नॉट ओनली द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, राइट? सो कुछ शॉर्टलिस्टेड सेक्टर्स हैं एसेट मोनेटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड परफॉर्मिंग एसेट्स जिस पे मोनेटाइजेशन करेगी गवर्नमेंट. So this include 26,700 kilometers of highway, 400 railway station, 90 passengers train, 4 hill railway station including Darjeeling and Himalayan railways. Existing जितने भी public sector infrastructures हैं that include telecom, power, transmission, distributions, petroleum and petroleum products, and even the natural gas pipeline. So these are some of the important sector that has been shortlisted for the asset monetizations. Now asset monetizations के concern क्या है? नीति आयोग ने डिस्क्राइब किया है कि monetizations का मतलब है ट्रांसफर ऑफ परफॉर्मिंग एसेट्स टू अनलॉक द आइडियल कैपिटल. जो कैपिटल लॉक्ड है, जो कैपिटल एक तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है, जिसमें काफ़ी हद तक लॉस देखी जा रही है, या दैट सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग, उसको किस तरह से गवर्नमेंट इंप्रूव कर सकती है और उसके जो एडिशनल बेनिफिट्स है वो ले सकती है. बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो एसेट मोनेटाइजेशन है, दे हैव रेज्ड 3 सेट ऑफ कंसर्न. 3 इंपॉर्टेंट कंसर्न है उसके. फर्स्ट इज द एसेट आइडेंटिफाई फॉर मोनेटाइजेशन, कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी, किस सेक्टर की कितनी लाइबिलिटी है या फिर कितनी अच्छी परफॉर्म कर सकती है. सेकेंड, द कंट्री कैन हैव ऑर्डिनरी सिटीजन एक्सपेक्ट टू रिसीव द परपेटली एडिशनल बेनिफिट्स. उसके जो बेनिफिट्स है वो एक नॉर्मल सिटीजन को कितनी मिल पाएगी. सपोज टेक अ एग्जांपल ऑफ रेलवे, राइट? अगर रेलवे की बात करें, सो रेलवे में अगर मोनेटाइजेशन हो रही है, सो वी हैव टू सी कि जो फी है, आई मीन जो फेयर है वो हाइक ना हो. फेयर शुड बी बिलो बिकॉज द पीपल कैन नॉट अफोर्ड अ हायर फेयर. जैसा हमने रिसेंटली में जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसमें देखा, उसके प्राइजेस काफ़ी हाई हैं, दैट इज क्लोज टू द एयर फेयर, राइट? Finally, the government could have looked upon the avenues mobilizing the resources rather than selling the taxpayer assets. को इसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि और भी दूसरे तरीकों को गवर्नमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकती थी, बजाय सीधे जो टैक्स पेयर मनी के जो अमाउंट है वो प्राइवेट प्लेयर के साथ मोनेटाइज करना. ना कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट की बात की गई. सो गवर्नमेंट हैज़ अवॉइडेड मेंशनिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन. गवर्नमेंट ने जो इसके नेगेटिव रिपरकर्शंस है उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं की है, but 2 obvious dimensions expert ने बताए हैं. First is the asset being offered for leasing or disinvestment can be created through substantial contribution, चाहे वो taxpayer public money हो, which could have stakes in the operationalization and the management. Experts का कहना है कि उसी पैसे को अच्छे से proper manage करने में भी यूटिलाइज की जा सकती थी. Second, these assets have until now been managed by the government and its agency
which operate the public interest, not driven by the profit making consideration. So whatever government is doing, they're possibly trying to benefit the citizen, but the private player which would be coming into the action, they would also look into their profit, right? तो वो एक जो ambiguity है वो हमेशा बनी रहेगी. ऑन पब्लिक सेक्टर एफिकेसी की बात करें, नीति आयोग ने अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम ये कहा है कि जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन द पब्लिक सेक्टर दैट वुड बी टैप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एंड एफिशिएंसी. एंड नीति आयोग हैव ऑब्जेक्टेड दैट एज्यूम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन एफिशिएंट. ये कॉन्ट्ररी होगा कि किस तरह से जो पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी है, जो इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर परफॉर्मर्स हैं वो अच्छे परफॉर्म कर पाए. अगर वो अच्छे नहीं कर पाते तो दिस वुड बी द गवर्नमेंट फेल्यूर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. Right? And in 2018-19, 28% of the enterprises were making losses. Right? So these are some of the reasons why government has come up with this decision. And this figure, large company, was up to 51%, the loss making. So it is realistic. We have to wait. We have to see, because जिस तरह से plan की गई है, we have to see in 4 years how much revenue can be generated. Whether this program was success or not, that time will have to tell. Right? So this is how you can conclude your answers. Now coming to the MCQ questions. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday's question. For the first question, the correct option is C, and for the second question also, the correct option is C. Today's MCQ with regards to the national mission, monsoon mission, consider the following statement. It was launched by the Minister of Environment, Forest and Climate Change. It aims to develop the state-of-art dynamic prediction system of short, medium and long-term forecast. So what is the correct answer? If you know, let me know in the comment section down below. Second, Hope or Amal is a mission which was recently conducted by which among the following countries, whether it is Iran, UAE, Pakistan or Sri Lanka. If you know the correct answer, write the answer in the comment sections. This was all about the daily news and questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.